हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम गोविंद है और आज हम वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसे मैं रोज़ पढ़ता तो हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा मैं अपनी बिटिया को ज़रूर पढ़ाता हूँ। द नेम ऑफ द बुक इज़ माई विज़डम बुक एंड एज़ यू वुड गेस बाय द टाइटल ऑफ द बुक, ये एक ऐसी किताब है जो विज़डम के बारे में बात करती है, जो ज्ञान के बारे में बात करती है, जो बुद्धिमत्ता के बारे में बात करती है, प्रज्ञता के बारे में बात करती है और एक ऐसी किताब जो मेरे जैसे लोगों के लिए तो अच्छी खासी है ही, लेकिन हमसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा ये बच्चों के लिए है। दिस इज़ हाईली recommended read for any kids. But what exactly makes it so important? Let's dive in. ऑल राइट, सो माई विजडम बुक, ये एक ऐसी किताब है जो बहुत ही छोटी सी किताब लगती है देखने में. इट्स अ शॉर्ट रीड बट इट इज़ नॉट अ शॉर्ट रीड. व्हेन आई से इट इज़ अ शॉर्ट रीड बिकॉज इट्स गॉट आई थिंक विद इन इट सेल्फ, लेट मी चेक, 108 pages, and if I recollect the number right, then it has got 75 different concepts that one can learn. 75 अलग अलग चीज़ों के बारे में ये बात करती है. But before I get on to the details of the book, let me define how the book looks. Yeah, it is often said that you should not judge a book by its cover, but nonetheless book है, cover है, देखना तो पड़ेगा, आपको बताना भी पड़ेगा. So the book, if you were to see, it's pretty attractive and charming. The cover, the paperback that I've got, यहाँ आप देखेंगे तो it's got that tinge of yellow. It's got a nicely embossed in golden the title of the book. It has got pictures of the deities, and let me read what's given on the front cover. So the paperback front cover says My Wisdom Book. Then it says Everyday Shlokas, Mantras, Bhajans, and more. And it is authored by Swami Mukundananda. It's a Red Panda publication, and I had taken some notes. So overall, as I said, it is 108 pages. The book cost me around 170 bucks or so. In fact, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी मैंने Amazon Flipkart में जाके देखा था. The current cost of the book, the price of the book is 172 rupees. I think you get it a tad cheaper if you take a Kindle version, but I would personally say कि आपको paperback version लेना चाहिए, because ये चीज़ ऐसी है जहाँ पे आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को दें, that the kid can in your house can actually pick up the physical copy and sort of read it. So I will not really recommend a Kindle version. I would recommend that you go and buy a paperback version if you would like to. And now let's talk about what's there in the book. ठीक है, but before we do that, let's talk about who has written this book. So I haven't read much of Swami Mukundananda, but I was really attracted by something that was mentioned. So Swami Mukundananda, he is a graduate of IIT Delhi and of IIM Calcutta. And it is after that that he left all that and he said कि ये नहीं है, हमको spiritual advancement करनी है, and he would work for the holistic betterment of others, right? So that is the background of the author. And now that we have discussed about how the paperback looks like, what it cost, the number of pages that you have got on it. Let's dive in to understand कि exactly book में है क्या. तो अगर आप पूरी बुक देखेंगे, दो पार्ट्स में बटी हुई है. फर्स्ट ऑफ द पार्ट दैट इट सेज इज फॉर जूनियर्स, या, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ गो टू दैट, या, एंड द नेक्स्ट पार्ट राइट इन द मिडल इज फॉर सीनियर्स. बट ऐसा नहीं है कि सीनियर्स मीन्स इट इज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये नहीं है. सीनियर्स ईयर्स मीन्स kids who are in teens, and then afterwards, of course, even for adults, even for senior citizen, it is applicable. The juniors are the ones जहाँ पे आपके बच्चे जो 10 साल से कम हैं, those who haven't even reached the age of a 9 or a 10. I think that is more relevant for them. Okay, so that is how the book is divided. But even within those, whether it is for junior और whether it is for senior, अगर आप देखेंगे ये पूरी की पूरी जो बुक है उसमें 4 तरह की चीज़ें हैं, जिस 4 तरह की चीज़ में बोलते हैं. इनफैक्ट अगर आप टाइटल देखें तो इट सेज श्लोकास, mantras, bhajans, and more. More में generally it has the wisdom nuggets. ठीक है. So what does a shloka, a mantra, and a bhajan merely mean from the sense of this, right? So shlokas, if you were to see, it has shlokas for daily activities. It would be basically shloka that one could chant when the person wakes up in the morning.
So what should you do when you wake up? And a lot of people don't know. What shloka can you chant while taking bath, while praying to the Lord, um, before partaking a meal? In fact, मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था and I try to search as I'm speaking, तब उस समय मैं एक पेज में गया and then I read, and while I'm actually searching for it, it said मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम. सो दिस थिंग जब मैंने जैसे ही पढ़ा, मैंने कहा अरे यार ये जो था मुखम करोति वाचालम, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर आई वाज इन 7th क्लास, 7th बी में बैठा था मैं, कहाँ कोने में बैठा हुआ था, मेरे साइड में मेरा फ्रेंड उस समय नीरज बैठा करता था, एंड मैम मल्होत्रा ने आके पढ़ाया था. सो मैम मल्होत्रा टॉट अस मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम. वो तब की बात है और मुझे वो अभी तक याद है. मतलब उस बात को 23 से 25 साल हो चुके हैं. इट इज बीन अ गैप ऑफ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, 23-25 years, and it still stuck with me. So the fact is that shlokas actually can have that sort of an impression, and it's not just that I remember it mukam karoti vachalam. I remember it because the meaning of it was so compelling. Mukam karoti vachalam, the one who cannot speak starts talking. Pangum langyate grim, the one who cannot walk will actually go ahead and get to the top of mountains. Yat kripa tamham vande, for the ones who have your grace, for the ones जिन पे आपकी कृपा बनी हुई है. परमानंद माधवम. Hey Krishna, the one who's ever so in bliss, to you I pray. In fact, this is the way it says, and this is how everything is given here, right? So Mukham Karoti Vachalam, first of all, they have it in Hindi or the Devanagari Lipi or Sanskrit, ultimately Devanagari Lipi. Then they have a transliteration. मतलब अंग्रेजी में भी वही चीज़ लिखी गई है. So it's in English. For example, English में when we say namaste, it will be NAMASTE. So that is the way they have actually written, and then they have meaning for it. So I will just read out the meaning for this. It say, we bow down to Sri Krishna Madhav, the ocean of supreme bliss, with utmost respect. By his causeless grace, a dumb person can speak words of wisdom, and a lame person can cross a mighty mountain. Fine. और ऐसा ही नहीं है, it also have very nice illustrations if you were to see it. So for the kids it starts appealing to them, and then they ask relevant questions. बहुत बार तो ऐसा होता है जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, then we like अच्छा ये तो मुझे भी नहीं पता है, and then you try and understand more and more about everything. So it's got all those shlokas. Another classic one, and then I was telling it to my kiddo, and then she asked me कि ये क्या है, and that was on ब्रह्मा अर्पणम. राइट. नाउ ब्रह्मांडपम एक ऐसा है कि मैंने बोला हुआ है पहले सब कुछ और प्रे करता भी था, लेकिन मुझे भी इतना अच्छी तरह से मीनिंग कई बार पता नहीं था. ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मणे तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना. सो उसका मीनिंग है फॉर दोज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन गॉड कॉन्शियसनेस द ऑफरिंग इज ब्रह्मन, द लैडल विद विच इट इज ऑफर्ड इज ब्रह्मन, the act of offering is Brahman, and the sacrificial fire is also Brahman. Such people who view everything as God attain him easily. Right? And then it's again got a very nice illustration where you can see two kids and they are ready to partake food. So that's how it actually talks about a lot of shlokas. It then also have mantras. Right? And then those mantras are also divided कि juniors के लिए किस तरह के mantras are more relevant, seniors के लिए ऐसे कौन से मंत्रास हैं जो ज़्यादा रेलिवेंट है. इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ भजन्स, एंड फाइनली इट हैज़ गॉट स्टफ अराउंड द जनरल विजडम. तो ये पूरी किताब अगर मुझे मैं अपनी तरह से बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ वेरी फाइन एक्सप्रेशन ऑफ वॉट द Vedas or what the scriptures of the mighty Indian culture actually present, और उसको बहुत ही सिंपलिस्टिक वर्ड में लाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ कि ये बच्चे इन चीज़ों को समझ सकें. सो आई लाइक द बुक, एंड आई वुड इमेजिन अगर आप बाई करते हैं तो यू वुड ऑल्सो find it relevant, and you would definitely right, find something or the other that would be useful to you, or something that would be new for you. I found a lot which was relevant. I found a lot which was highly beneficial, and thankfully मेरी बिटिया को भी थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट आ गया है, तो आई एम होपिंग दैट शी इज़ एबल टू रीड more and more. Well, that's it for today. I don't have much more to say. A short read, but not a short read. Costs you around 170 rupees. You can get onto Amazon and Flipkart, buy it. In fact,
I will put the links onto this YouTube video's description. But again, thank you for giving your time and thank you for watching this video. Until next time, bye.